Hello students, today I am going to explain about ionic bond. As in my previous video, I explained about covalent bond. What is ionic bond? The bond formed by transferring of electron from one atom to another is called ionic bond. Or students, you can say that the bond formed between metal and non-metal is called ionic bond. For example, sodium is a metal. The electronic configuration of sodium is 281. So students, in the formation of ionic bond, there are three steps. First, formation of cation, formation of anion, and the last, formation of electrostatic attraction. Students, in this there is a force which is called electrostatic force of attraction. After that, bond is formed. Students, I am repeating again. In ionic bond formation, there are three steps. First, formation of cation, formation of anion, and electrostatic attraction between opposite ion. That's why this is called electrovalent bond. The other name of ionic bond is electrovalent bond. Favorable condition 3 होती है, most and most important. If you are a student of class 11, then this is a question of your NCERT book, and if you are preparation for NEET and JEE, then this is also very important question. Low ionization enthalpy, high electron gain enthalpy, high lattice energy. लो ionization enthalpy होनी चाहिए metal of non-metal, high lattice energy of ionic compound. By the help of this example, I will explain to you low ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? The amount of energy when an electron is removed is called ionization enthalpy. Students, first, a very important thing which you need to remember, कोई भी कंपाउंड उस कंडीशन में स्टेबल होता है जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है. तो हमें कंपाउंड को मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करानी है. इन दिस कंडीशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल से किसी इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आपने जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए क्योंकि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए है. क्लोरीन, in this condition the amount of energy released when an electron is added, जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी मिनिमम एनर्जी होगी, उतना कंपाउंड आपका स्टेबल होगा. तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जितनी ज़्यादा. लास्ट, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड. एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation and anion. Both are in gaseous state. Gaseous cation and gaseous anion. Students, जब एक अपोजिट आयन एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड होती है. एक पूरा कंपाउंड बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपकी रिलीज्ड हुई है, दैट्स कॉल्ड योर लैटिस एनर्जी. आई एम रिपीटिंग अगेन. When 1 mole of ionic compound is formed from
gases cation and anion, then the amount of energy is released is called ionization, lattice energy. तो लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना कंपाउंड स्टेबल होगा, जितनी मिनिमम एनर्जी होगी. सो these all are the very important favorable condition for the formation of ionic bond.